हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आइसर के वीडियोस बना के थकी हूँ और आइसर के अंदर रह के वीडियो बना के थकी हूँ। रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आई विल बी ट्रैवलिंग, सो आई एम ट्रैवलिंग टू देहरादून दिस मंडे और आज सैटरडे है। वैसे मैं हमेशा पैकिंग बहुत जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जल्दी में सारा काम खराब हो जाता है, तो मैं पैकिंग बहुत ही पहले स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन पैकिंग से भी पहले मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं लिस्ट तो मैंने एक हफ्ते से पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया। और इफ़ यू मे, ये है गूगल कीप और इसमें है मेरे लिस्ट्स। तो मैंने क्या पहनना है, आउटफिट्स फॉर देहरादून, फिर लगेज में क्या क्या लेके जाना है और कैरी बैग में क्या क्या लेके जाना है। कैरी बैग के अंदर एक स्मॉल इसेंशियल बैग होगा, उसके अंदर क्या क्या लेके जाना है, सारी लिस्ट तैयार है। लिस्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो मुझे लगता है कि हो गया है वो है लीव एप्लीकेशन, क्योंकि आइसर में लीव एप्लीकेशन, और ये एकेडमिक लीव है क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट काम से जा रही हूँ। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल, सो आई कांट टेल यू एट दिस पॉइंट। तो एकेडमिक लीव में और भी दिमाग ख़राब होता है क्योंकि पर्सनल लीव तो वो 30 डेज़ होती है, एक बार दिया, 2 बार दिया, ख़त्म हो गई, दोबारा मिलेगी नहीं। पर एकेडमिक लीव आप कितने बार भी ले सकते हो। तो वो काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको अप्रूव करने में कि एक्चुअल लीव है कि नहीं है, एक्चुअल इन्विटेशन लेटर है कि नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लीव मिल गई है। और इतने दिन से वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था तो एकेडमिक लीव तो मिल नहीं रही थी किसी को। अब फाइनली चीज़ें ऑफलाइन हो गई हैं, तो ये मेरी पहली एकेडमिक लीव है। और ये मेरी एकेडमिक लीव 2 साल बाद लिए मैंने, 2-3 साल हो गए मैंने एकेडमिक लीव ही नहीं ली क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहती। I begin to I begin to for sure. सो ये है मेरा लगेज। मैं हमेशा आई ट्राई टू फोल्ड इट दिस वे, इतना टाइटली पैक्ड है दैट फ्लाइट्स में भी अगर वो बैग को इधर उधर रखेंगे ये बिल्कुल ही मूव नहीं होता, यूल गेट इट एज इट इज़। तो इसमें मेरे पैंट्स, जैकेट्स, टॉप, नाइट सूट, और यहाँ पे है मेरे 1 पीस और टॉयलेटरी बैग एंड सारी चीज़ें यहाँ पे संडे नाइट। एंड आई हैव done my packing completely, so I have added few things. I've added my shoes here and my slipper here, my laptop bag, which is empty. I don't have, my laptop is not there, so it's just a empty bag. And then I have added my cap here in case we get to go out, and some jewelry here, and that's all. And this is it for the luggage. और पैकिंग हो गई है, लिस्ट बना लिया था, तो पैकिंग करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। यहाँ पे होटल में रुकने वाले हैं तो ज़्यादा कुछ मैं लेके जा नहीं रही हूँ, टावल वगैरह कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला है ज़्यादा कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, खाने के लिए कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ। बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ उस जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि द वर्क इज़ एक्सट्रीमली डिमांडिंग। टाइम टेबल मिल गया है हमें और हमें मॉर्निंग 8 o'clock से नाइट 8 o'clock तक लगातार काम करना है। ऑब्वियसली बीच में लंच होगा, पर आई एम सो मच स्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सो काफ़ी स्ट्रेस उस ट्रिप के लिए।
देखते हैं क्या होता है। मैं पहली बार देहरादून जा रही हूँ, उसका मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। एक्चुअली मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये जो काम है ना, उसकी वजह से मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि भाई जितना पास आ रहा है ये ट्रिप उतना ही ज़्यादा मैं नर्वस हो रही हूँ। होपफुली जब आपको पता चलेगा कि मैं किस काम के बारे में बात कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है। बट अभी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि इज़ इट कॉन्फिडेंशियल, हाउ कॉन्फिडेंशियल इज़ इट, आई मेक यूट्यूब वीडियोज़, कैन आई व्लॉग दिस दैट, तो उनका एक ही रिप्लाई आया कि वी विल टेल यू व्हेन यू कम हियर। सो नाउ हैव टू वेट। बट मैंने सोचा कि पैकिंग वीडियो तो बना ही सकते हैं, और ये सारे वीडियोस तब आएंगे जब मैं देहरादून का सारा काम करके वापस आइसर में आ जाऊंगी, तब ये सारे वीडियोस रिलीज़ होंगे। तो अगर ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो ये वीडियोस कहीं नहीं जाएंगे यूट्यूब पे, पर अगर ये वो मुझे अलाउ कर देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस हाइड करने के बाद, देन यू विल गेट टू सी दिस वीडियो। और मुझे लग रहा है कि मैं और भी सारे वीडियोस बनाऊंगी, मे बी अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। मैं अकेले यहाँ से ट्रैवल करूँगी, कोई फ्रेंड कोई नहीं होगा, और मेरा ओवरनाइट लेओवर है बैंगलोर में, तो मैं वहाँ पे भी मैंने उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रखी कि वहाँ पे मुझे पूरी रात में करना क्या है। मैंने पंचायत सीज़न 2 देखा नहीं है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, पर मैंने प्रॉमिस किया खुद को कि वो नहीं देखना है, वो मैं वहीं पे बैठ के देखूंगी, क्योंकि पूरा एक सीज़न होगा तो काफ़ी टाइम पास हो जाएगा मेरा, और अकेले रहूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, राइट। तो बहुत बात कर ली मैंने, बहुत ज़्यादा बात कर ली, और नाउ लेट्स गेट टू द ट्रैवल वीडियो। एंड दिस इज़ माई कैरी बैग which will have my laptop, iPad, coffee mug that I'll be taking, and all my deo and spray, and my makeup bag. So this is my iPad, so I'm charging this. My phone was my Mac that I will be charging in few minutes, and that is where I'm charging my power bank, and then I have to charge my earphone as well, and that's about it. Hi everyone, it's Monday today, and right now it's 2:30 and I have to leave at 4:30 for the airport. Usually I would have slept, but the event I'm going for is starting today, and at 2:30 we have an inauguration ceremony which I will be attending online because I'll be reaching there tomorrow. It's an overnight layover, guys. I'm already tired, so I have made myself a cup of coffee so that I can sit through the ceremony, and then 2 hours later. I'm all set to leave, and that's my bag, that's my luggage, and that's my carry bag. It's heavy because of laptop and iPad, and that's my pillow because of overnight stay I'm taking this time. And I'm all ready. A loose pant, a loose shirt, and that's all. My cab will be here anytime, and it's 4:10 and I have to leave at 4:30. And I have cleaned my room because I want to come back in a clean room, so everything is clean. I washed my utensils, and that's all. I'll be leaving for 1 week, and I'm gonna miss my mom. This is my favorite wall. I'm gonna miss my mom. I am at my favorite restaurant after so many years, so many days. I'm at it's a dosa place, but they make more than 100 types of dosa, and I have ordered pizza dosa, and I have already tried it multiple times. I'm so excited to have it. नहीं नहीं I have to. I have reached airport and I have to find a comfortable space for myself. There are a lot of empty places here. Let me find a place which has a charger so that I can charge my phone, because I have to stay here at least 1.5 hours before I board my flight. It's 9:30 p.m. and it's time for boarding, and I'll reach Bangalore around 11 or 11:30.
gave me emergency exit seat with extra leg space. It was absolutely relaxing. Although I can't see anything outside, so I might just going to nod off. Lovely empty lane, and we reached Bangalore. It's 11:30 p.m. and this is my absolute favorite place in Bangalore airport. I usually end up getting 3 to 4 hours long layover in Bangalore airport, and I usually sit here. 3:28 a.m. Panchayat season 2 is over and now I'm watching movie Jersey. I'm completely tired. I'm just trying not to sleep. I have to board the flight at 4:30 a.m. and I just have 1 hour. Hopefully I will not sleep. The seat is in front of tiffin center. You should try this place. This is amazing for long layover. One eternity later. Hey, it's 8 in the morning and we have reached Dehradun. It's drizzling here and it's completely nice transfer from Kerala to here. Now I am in front of the other hotel where other participants are staying, and I'll be staying in some other hotel. So we are waiting for them to check in, and this is my hotel room. And I'll show you other thing in detail in next video, because if you're seeing this video that means I'm allowed to post the video and it's not as confidential as I thought. So stay tuned for the next video. I'm going to sleep now because I have to go to the institute at 12 and I have 2 hours to sleep. So bye bye. Thank you for watching. See you in my next video.